So hello everyone, welcome back to the new video. अभी हम लोग जा रहे हैं ओल्ड गोवा चर्च। अराउंड 16-17 किलोमीटर है, तो चलते हैं। सो गाइस, हमें सेकेंड बस मिल चुका है जो हमें ले जाएगा ओल्ड गोवा। सो लेट्स गो। सो हार्डली 15 या 20 मिनट्स लगे यहाँ आने के लिए। एंड हम लोग पहुँच चुके हैं अभी हमारी लोकेशन पे। सो अभी हम हैं ओल्ड गोवा चर्च। I've been busy running my mouth dry, speaking lines of how to find higher hopes and sensibilities meant for me. Let's dive in, create a problem just to fix it, the perfect fit. We're back to time, catching up on all the things we missed, so our interest. ओवरऑल रूट ऐसा था कि हमने मीरामार से बस लिया टीटीसी बस स्टॉप के लिए, कदम्बा बस स्टॉप। देन वहाँ से हमने कदम्बा से बस लिया ओल्ड गोवा के लिए। 25 मिनट्स में उसने हमें पहुँचा दिया यहाँ पे। मैं अभी आपको थोड़ा ओल्ड गोवा का हिस्ट्री बता देता हूँ। ये चर्च जो है वो 16th सेंचुरी में बनाया गया था बाय पोर्टुगीज़। गोवा का जो फेस्टिवल होता है जो 3 दिसंबर को होता है, तो वो टाइम पे ये जो मेरे पीछे जो चर्च है उसका नज़ारा देखने लायक होता है। यहाँ अंदर साइड एक सेंट, उनका यहाँ पे मम्मी रखा हुआ है जो अराउंड 450 इयर्स पुराना है। सो गाइस, अभी एंट्री ओपन हो चुका है। सो चलते हैं अंदर एंड देखते हैं क्या है। The people who stand out, the faceless crowd, lost and found, picking up on the speed of sound to faster ground, moving on. I can't hold back all the new progress, what I've done best, but how about now, showing off all the things we missed, all your interests. गाइस, अभी हम लोग प्रोफेशनल फोटोग्राफर से फ़ोटो ले रहे हैं।
जिसका प्रिंट हमें मिलेगा 2 मिनट में और फ़ोटो का प्राइस रहेगा 100 रुपये में 2। फोटोग्राफी तो हो चुका है, अभी हम लोग वेट कर रहे हैं फ़ोटो प्रिंट का। सो गाइस, मैंने देखा था आज का वेदर, तो आज का वेदर कुछ माइल्ड बता रहा था, सनी नहीं था बट बहुत सनी है। मेरा फ़ोन भी गर्म हो रहा है एंड बहुत धूप लग रही है बट मज़े बड़े आ रहे हैं। सो मेरे पीछे जो म्यूज़ियम है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट का ही है एंड यहाँ पे चर्च है जो जिसका अभी धीरे धीरे वो टूट रहा है बट उसको रिजर्व करके रखा हुआ है। इट इज़ रियली अमेजिंग प्लेस एंड अभी हम लोग बाहर निकल चुके हैं। प्यास बहुत लगी है तो सबसे पहले कुछ लेते हैं पीने के लिए। तो अभी हमने नींबू पानी ऑर्डर कर लिया है एंड पीछे बस शायद हमारा ही वेट कर रही है। भाई 2 मिनट रुक जा, नींबू पानी पी के तेरे साथ जाता हूँ। चल गया। Few inches later. होता है गोवा का बस वाला। Few inches later. फाइनली हम पहुंच गए हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक कर देना अगर अच्छा लगा, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।